A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. I am Dr. Abdul Qadir, working as a professor and head of Department of Medicine and Gastroenterology, Muhammad Medical College Hospital, Mirpurkhas. I welcome all of you in third MMC COVID-19 web series. This web series is organized by Muhammad Medical College Hospital, Mirpurkhas, in collaboration with Pakistan Medical Association, Mirpurkhas, Yakat University of Medical and Health Sciences, Jamshoro, Asian Institute of Medical and Health Sciences, Hyderabad, and Pak GI Liver Disease Society. Today, the main program is by the Department of the Surgery, Muhammad Medical College Hospital, Mirpurkhas. There are two speakers in this web program today. First speaker will be Dr. Aijaz A, who is the head of Department of Surgery, Muhammad Medical College Hospital, Mirpurkhas, and second speaker is Dr. Syed Razi Muhammad, who is Dean and Professor of Surgery, Muhammad Medical College Hospital, Mirpurkhas. So before starting our scientific program, I will give the mic to the Professor Dr. Shamsul Arfeen, who is the Vice Principal of Muhammad Medical College Hospital, Mirpurkhas. He is the moderator of this web series. So without delay, over to the Dr. Shamsul Arfeen Khan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفع ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamu alaikum and welcome to everyone on this series of the sessions on COVID-19 and other problems, medical related problems. So without any delay, I request Professor Dr. Aijaz Memon, who is the head of the Department of Surgery and Professor of Surgery at Muhammad Medical College Hospital, Mirpurkhas, and he will talk on COVID-19 and the laparoscopic surgery. So I request him to please give his presentation, Professor Dr. Aijaz Memon. Thank you, Shamsul. Assalamu alaikum to everybody. Walaikum salam. So I'm going to start my presentation, and I'm going to talk about the laparoscopy in the COVID-19 pandemic. I may not have the full screen. I think I'll try. Next slide, please. Yes. So, yes. First of all, let us have a view on the COVID in Pakistan. The COVID-19 pandemic in Pakistan is part of the ongoing pandemic of coronavirus disease 2019, COVID-19, caused by severe acute respiratory syndrome, coronavirus 2, SARS-CoV-2. The virus was confirmed to have reached Pakistan on 26th of February when a young student was found positive who had traveled to Iran, came back to Iran from Iran. Now, as of July 14th, yesterday, 2020, there have been so far 253,607 confirmed cases. Out of these, 77,628 cases are active and 170,656 have recovered. And so far, 55,320 deaths have taken place. Now, what is COVID-19? Just a brief, COVID-19 is a highly contagious RNA virus with a size range of 0.06 to 0.14 microns. Along with the nasopharynx and upper respiratory tract, the virus can be found in the entire GIT. The virus have been found in nasal swab, saliva, sputum, throat swab, blood, and feces. The only known modality of spread is through respiratory droplet transmission. Now,
Let us talk about the resumption of surgical services uh, after the peak of the COVID has been over. So we have approached the peak of the COVID infection and are now on decline. And we have to resume, or some may have resumed, the surgical services. In order to resume the surgical services, there is a persistent need for us to consider the safety of all healthcare personnel, resource priorities, infection rates, in addition to outcome of the individual patient. Elective major surgery may be carried out with acceptable risks in selected group of self-isolated and swab-negative patients, like cancer patients with perioperative care taking place in the COVID cold environment. Now, according to Intercollegiate General Surgery Guidelines on COVID-19, there are two types of surgical patients coming to the hospital, and these must be separated on the basis of potential infection risk. One are those who are coming for elective surgery. Now, the elective patients should be isolated for 14 days and then screened with questionnaire and tested by throat swab within 72 hours of surgery. Undergoing surgery within 72 hours of undergoing surgery in a COVID cold site. Acute patients whose status is unknown and who are therefore a potential risk to themselves and others. In emergency general surgery patients undergoing CT abdomen and pelvis for diagnostic purpose, their assessment should include CT chest unless equally reliable and rapid alternative testing methods are locally available. So this is how we can at least come to know some status about the acute patients whose status is unaware, is not known. Now, key considerations before resuming elective services are, first of all, timings. Now, the time is appropriate because the peak has been over. So, a sustained reduction in the rate of new COVID-19 cases for a period of time past the peak to ensure necessary staff and associated facilities are available. Means when the once the peak is over, the staff will be coming back to their duties and then the staff will be available. Number two, testing. Hospitals should know their diagnostic testing availability and develop clear policies for addressing testing requirements and frequency for staff and patients. Number three, personal protective equipments. Hospitals should be satisfied that they have adequate PPE and surgical supplies appropriate to the number and type of procedures performed and clear policies on how and when to use them. Now, key considerations before you resuming elective services continue. Availability of core interdependent services. Now, this is very important. Care needs to be taken so that essential perioperative services like diagnostic imaging, anesthesia, critical care, sterile processing are all also ready to commence operations before resuming elective surgery. Now, in situations where these facilities are not available, then they should look to some nearby hospitals where these facilities are available so that they can take help for temporary purpose. Local coordination to ensure the above requirements are in place and patient's care pathway is appropriately managed so that the resumption of services is safe and efficient. Supporting the surgical workforce, we must ensure to secure adequate PPE to protect both patients and members of surgical team, ensure adequate testing and appropriate frequency of testing is available, continued adherence to universal precautions such as hand washing, social distancing, consider levels of stress and fatigue in otherwise healthy workers. Also, workers returning to work following a COVID-19 infection may be at more risk for physical and emotional exhaustion. So these things have to be considered along with the protective considerations. Training should be made available on new ways of delivering healthcare, including virtual clinics.
Now we come to the actual topic, that is laparoscopy in COVID. Now, safety with laparoscopy. Despite the concern regarding aerosolization, there is currently no evidence of viral transmission during laparoscopy, according to the Association of Laparoscopic Surgeons of Great Britain and Ireland. There is no evidence to suggest an increased risk of laparoscopy compared to open surgery in elective setting. The views of the Association of Laparoscopic Surgeons of Great Britain and Ireland are that laparoscopy carries significant benefit to the patient and hospital, and these should be part of each individual decision-making process. Now, the advantages of laparoscopy over open techniques. Laparoscopy, including robotic techniques, carries the advantage of a decreased length of stay and consequent increased hospital bed availability. For patients, laparoscopy may result in a decreased risk of complications and a faster recovery. Laparoscopy allows a self-contained operative field with less risk of fluid spillage because you are working in a closed you are working in a closed environment, so that's why the risk of fluid spillage is minimal. Whereas during open surgery, operative staff are in much more close proximity and therefore increased risk of cross-contamination compared to laparoscopic or robotic surgery. Now, patient selection. Initiation of elective surgery should include careful case selection, means laparoscopic elective surgery, starting with a younger patient. Younger means less than under 70 years of age, with fewer comorbidities like ASA less than 2, aiming for day case, so that patient should not stay for longer in the hospital. Reduced hospital stay is standard practice. Surgery should be deferred where COVID-19 infection is either identified or suspected. It's better to postpone or defer the surgery and ask the patient to go into isolation rather than embarking on the surgery once the patient is positive or there is suspicion of him being positive. The risks and consequences of COVID-19 infection should form part of the informed consent process. This is very important. These things should be clearly mentioned in the consent form. We also recommend that data continues to be submitted to be available prospective databases to increase knowledge in this area. Now, the Association of Laparoscopic Surgeons of Great Britain and Ireland have recommendations as discussed below. There is a developing international consensus that urgent elective surgery should recommence and the perceived risk of aerosol production in laparoscopy can be minimized with appropriate techniques. Therefore, the ALS GVI makes the following recommendations for priority level 2 and level 3 surgery that is planned over next 3 months. Number 1, routine use of COVID-19 testing. It's very important that the COVID-19 testing should be done on all patients, and pre-operative self-isolation for all suitable patients following national guidelines. Means all the patients who are suitable for surgery, they should be put in isolation pre-operatively till they are operated. Routine use of full personal protective equipment for all operating theater staff following national guidelines. Elective laparoscopic procedures should be performed in a designated clean area with a suitably trained theater staff. Number 4, laparoscopic procedures should be carried out by senior trained laparoscopic surgeons in order to minimize the operating time and potential of aerosolization. Because if there will be a senior surgeon, he will take minimum time and there will be minimum
aerosolization risk. Prolonged procedures may entail dual consultant operating and the need for regular breaks and to reduce fatigue. As it is recommended that the procedure should not prolong more than half to 1 hour. So if there is a long procedure, then um, the, the two consultants can operate alternately to continue the procedure. Routine use of a closed circuit smoke evacuation or ultra low particulate air ULPA filtration system should be there. Ultra low particulate air filters can remove 99.99% of airborne particles with a minimum particle penetration size of 0.05 microns, aerosol particle size less than 5 microns. Use of techniques to minimize possible aerosolization from port sites. Now that is number one, careful port insertion techniques. Number two, appropriate port size selection. Number three, minimizing instrument exchange. Instrument exchange should be minimal, not frequent. Use of disposable ports that may reduce gas loss. Consider balloon ports and ports with diaphragm type values will minimize the aerosolization. Content extraction system means if you use a content extraction system, then when the port is removed, the diaphragm will close the hole, so there will be minimal aerosolization from inside. Use of lowest abdominal insufflation pressure for safe progress, and so that if there is a high pressure, then there are chances of that aerosolization much more. So the pressure should be, insufflation pressure should be kept at 12 millimeters mercury or less. Minimal use of energy devices during procedures like diathermies uh, should have minimal role to reduce smoke plume and particle aerosolization. Routine close evacuation of all gas at the end of procedure prior to specimen and port removal. The evacuation of the gas should be done in a closed manner so that there is minimal aerosolization, and that is done before you remove the specimen and ports. So these are the references from where this presentation has been taken away. Any questions? Yes, thank you very much, Professor Dr. Aijaz Memon. You have given a very nice and very good presentation on your topic of the laparoscopic surgery. We will have the question in the end. I will collect them, and inshallah we will ask. So you will remain with us till the end of this program. Our next speaker is Professor Dr. Syed Razi Muhammad. He is Dean and Professor of Surgery at Muhammad Medical College Hospital and College, Metokha. So I request him to please give in the presentation. He will talk on the COVID-19 and its effect on the daily lives of the people. So Professor Dr. Syed Razi Muhammad, please. Assalamu alaikum everybody, and thank you very much Professor Shamsul Arfeen. Very nice presentation by Professor Aijaz, and he's made my life easy by describing several things, and so I can continue with because I had a high number of slides and I thought I'll take a long time, but he has covered some things, so I won't have to dwell into that. और बेसिकली जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो मेरी कोशिश ये है कि जो चीज़ें रिपीट हुई हैं वो पहले की जा चुकी हैं वो रिपीट ना हो, और उसमें ज़्यादा कोशिश मेरी ये है कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मुझे आई हैव बीन लेड टू बिलीव दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल वाचिंग ऑन द सोशल मीडिया. सो मेरी कोशिश ये है कि अब जाहिर है कि सीनियर लोग जो बैठे हुए हैं, प्रोफेसर शमसुल आरफीन है, प्रोफेसर एजाज है, प्रोफेसर अब्दुल कादिर है, इनको तो चीज़ें पता ही, लेकिन बाज़ लोगों को बेसिक सवालों के भी जवाब शायद नहीं पता. तो ये बेहतर होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए और गुफ्तगू की जाए. मुझे यहाँ पे एक दाग दहलवी का बैठे बैठे एक शेर अचानक याद आ गया, जो कि इस मौके से बड़ा सही है कि
अफशाए राज़े इश्क से, शमसाब, अफशाए राज़े इश्क से गो जिल्लतें हुई, मोहब्बत का इजहार कर दिया तो जलील हो गए। अफशाए राज़े इश्क से वो जिल्लतें हुई, लेकिन उसे जिता तो दिया, जान तो गया। तो लोगों को जनवाने में और इल्म पहुंचाने में और मालूमात फराहम करने में बड़ा मजा है। तो बहरहाल अब ये तो मैं अपनी रूटीन की स्लाइड से आगे बढ़ता हूँ और काम की बात बताता हूँ। 5 सवालों के जवाब मैं चाहता हूँ कि मैं दे दूँ। एक तो ये कि हाउ इट इज अफेक्टिंग अस इन वेरियस वेज, जो कि मेन टॉपिक है। उसके बाद से हाउ गवर्नमेंट, आपने देखा ना कि गवर्नमेंट की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से, रिलीजियस लीडर्स की तरफ से कंट्रोल करने की बातें हो रही हैं, लेकिन एक्चुअल साइंस बिहाइंड कंट्रोलिंग द आउटब्रेक क्या है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। तीसरी बात यह कि वैक्सीन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो आज तक की तारीख में उस पर क्या प्रोग्रेस है और क्या है। फिर चौथा सवाल में एक मुझसे पूछा गया और 2-3 लोगों ने पूछा बड़े उसमें कि अगर वैक्सीन डेवलप नहीं होती, और मीडिया में आ रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल हैव इट, तो जब होना ही है तो हो जाए, देर किस बात की। तो उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा कि फिर देर देर करने में भी फायदा है भाई। और कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी तक अनआंसर्ड है। तो ये 5 सवाल हैं, अगर आप इसको देख लें कि हाउ इज इट अफेक्टिंग अस इन वेरियस वे, हाउ कैन इट बी कंट्रोल्ड एंड हाउ शुड इट बी कंट्रोल्ड। तीसरा ये कि वैक्सीन के बारे में क्या सवाल है। चौथा ये है कि अगर वैक्सीन नहीं होती तो क्या हम अभी अभी लगवा लें अपने आप को। शम्स साहब के तो माशाल्लाह रिकवर हो गए, और कोई हो उसके पास जा जाके लगवा ले। और दूसरी बात ये कि ऐसे कौन से जवाब है जिनके अभी तक जवाब नहीं है। होगा ना, इसमें से बैठना पड़ेगा। तो ये इन 5 के जवाब। पहला सवाल जो है हाउ इज इट अफेक्टिंग अस, तो एक तो फिजिकल अफेक्ट है, लोग डेथ भी हो रही हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, इमोशनल इफेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल हैं, पॉलिटिकल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड एजुकेशनल। तो लेट्स ब्रीफली सी देम। पहली बात यह है कि फिजिकल इफेक्ट्स और डेथ्स का क्या है, जो अभी एजाज साहब ने अच्छी तरह बता दिया कि हमारे मुल्क में भी अभी तक जो है ना वो इतनी डेथ और इतने इफेक्ट्स हो चुके हैं, जबकि वर्ल्ड वाइड जो है वो 13.2 मिलियन लोग अफेक्टेड हो गए और 575,000 की डेथ्स हो चुकी है। आज की तारीख में ये खबर आई, आज की खबर है, टुडेज खबर, कि अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो नवंबर तक 2,24,000 कोरोना वायरस डेथ यूएस में हो जाएंगी। यानी अभी 1 लाख हुई है, तो अभी नवंबर तक अगले महीने में 1 लाख और डेथ होनी है अभी यूएस के अंदर। और यूके का आया है कि अगर देयर विल बी 120 डेथ्स दिस विंटर अंटिल अर्जेंट एक्शंस आर अंडरटेकन, यानी ये 40,000 हो गए हैं, उससे पूरे मुल्क में तबाही फैली हुई है। तो अभी जो है वो 1,20,000 और होंगे विंटर में। अगर उन, तो जो लोग ये समझ के बैठे हुए हैं कि जी अभी कुछ भी नहीं होगा, आराम से बैठ जाओ, तो ये 2 दुनिया के बड़े मुल्कों की आज की खबर है उनके लिए। अच्छा, फिर जिनको हो चुका है, आई डोंट वांट टू स्केयर एनीबॉडी, लेकिन अभी इटली से एक रिपोर्ट आई है जिसमें मालूम हुआ है कि जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो उनके हो रहे हैं ना, वो भी बड़े हो रहे हैं। साइकोसिस, इंसोम्निया, किडनी डिजीज, स्पाइनल इन्फेक्शन, स्ट्रोक्स, क्रॉनिक टायर्डनेस, मोबिलिटी इश्यूज, और ये सारी चीजें जो है ये हो रही है उनको, जिनको के हुए हुए 6-6 महीने, 5-5 महीने गुजर गए। तो अब जो है आप ये देख रहे हैं कि ये सब प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है। अच्छा, इमोशनली हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है, रिलेशनशिप पे अफेक्ट हो रहे हैं। आइसोलेशन जो है, इट इज कॉजिंग ह्यूज इम्पैक्ट। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर अनेबल टू गेट देमसेल्फ आइसोलेटेड। वो कहते हैं यार मरना है तो मर जाए, लेकिन अब बंद नहीं रह सकते, बाहर निकलो। हम देखते हैं बाजारों का क्या हाल हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, कोई कोई सपोर्ट नहीं है, आउटसाइड वर्ल्ड से कोई सपोर्ट नहीं है, हुकूमत ये वो, तो उसकी वजह से और प्रॉब्लम हो रही है। अभी आप देखें कि कराची में अल्लामा तालिब जौहरी का इंतकाल हो, मैंने उनसे कहा था कि देखें आप घर से मत निकलें, घर में आना बंद कर दे लोगों का। उन्होंने कहा मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि मैं लोग बहुत, और लोगों ने आखिर में वही हुआ जिसका हमें खतरा था, और अभी भी लोग बाज नहीं आ रहे। अच्छा, फिर एक बात ये कि यंगर पेशेंट अफेक्ट हो रहे हैं, बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। बच्चे इस बात पे रो रहे हैं कि जी हमने आके अपने वालिदैन को लगा दिया, उनका इंतकाल हो गया इसमें,
तो एक गिल्ट का एक समंदर है जो यहाँ से वहां तक फैला हुआ है। ये इमोशनल की बड़ी अच्छी स्लाइड है जो मैंने रखी है इसमें। इसमें ये है कि अगर आप देखें तो पहले तो अनअवेयर होता है मरीज या मरीज के रिश्तेदार, अनअवेयर होते हैं। फिर डिनायल, नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। फिर डर लगता है, ये वेरियस स्टेजेस है। फिर खौफ आता है कि यार फला को हो गया था। फिर एंगर कि यार क्यों हो गया, वाई मी, ये कौन लाया था, उसको क्यों घर आने दिया, इसका जिम्मेदार कौन है, क्या मसला है इसके साथ। फिर रेजिस्टेंस कि भाई कोई इसको ना छुए। फिर इसके बाद आखिर में एक्सेप्टेंस जब आती है, फिर ओपननेस, फिर टेस्टिंग, फिर रीलर्निंग, और फिर तो ये सारे इसके स्टेजेस से गुजरता है एक आदमी। अच्छा, फाइनेंशियली कैसे अफेक्ट कर रहा है? द फाइनेंशियल न्यूज इज कि इस वक्त हर एवरेज आदमी दुनिया का जो है वो 19% पुअरर है देन ही वाज बिफोर। पर्सनली जॉब लॉसेज हुई है। मैं आपको एक छोटी सी इसकी मिसाल दिखाता हूँ कि शॉपिंग में अगर आप देखें तो चाइना में 32% से शुरू होकर मेक्सिको में 80% शॉपिंग कम हो। यानी आप ये इट्स अ ह्यूज थिंग। यानी अबाउट अराउंड 50% ऑफ द वर्ल्ड जो है वो शॉपिंग नहीं कर पा रहा जो पहले कर रहे थे। तो इट्स नेवर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दिस हैज हैपेंड लाइक दिस इन सच ए वाइड स्केल लेवल। अच्छा, जो फरलॉक का मतलब ये होता है कि जो काम पर किसी वजह से भी ना पाए, चाहे वो निकाल दिए गए हों, चाहे वो कोई और वजह हो, तो आप ये देखें कि 20 से लेके 40% तक लोग जो हैं वो कामों से फारिग हो गए। जो वो काम कर रहे थे वो नहीं कर रहे। ये वर्ल्ड के अंदर ये एक इसका इम्पैक्ट हुआ है। फिर आप ये देखें कि स्टॉक मार्केट जो है उनका जो है वो तकरीबन 20% तो बड़े आराम से डाउन हुई, 35% तक नीचे आएगी। अब 20 पे आगे रुकी है। तो वर्ल्ड में जो स्टॉक एक्सचेंज था उसका सारा का सारा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड मैंने आपके लिए दिखाई खास तौर पे। इसको जरा देखिए एजाज साहब। ये देखें कि 2019 में 2 लाख से क्रॉस कर गई थी डेली फ्लाइट इंटरनेशनली, और अब इसकी वजह से 1 लाख पे आ गई। 50% ड्रॉप इन द इंटरनेशनल। हमारी पीआईए तो खैर बंदी हो गई, लेकिन बाकी दुनिया का भी कोई अच्छा हाल नहीं है। देयर इज 50% ड्रॉप इन द नंबर ऑफ फ्लाइट्स दैट आर टेकिंग प्लेस। पॉलिटिकली अगर आप देखें तो इस वक्त ह्यूज इम्पैक्ट है, और मजीद होगा। वो ये होगा कि आपकी तैयारी क्या थी, हुकूमत ने क्या किया हुआ था, कोई रिजर्व रखा हुआ था, नहीं रखा हुआ था। अच्छा, अब इसमें जो हुकूमतें ऐसी हैं जो कि सेल्फिशनेस के प्रिंसिपल पे चलती, मिसाल के तौर पे वर्ल्ड का सारा जो रेमडेसिविर का जो स्टॉक था वो यूएसए ने खरीद दिया। अब इसमें बड़ा एंगर पाया जा रहा है दूसरे मुल्कों में कि भाई ये क्या तरीका है, हमारे यहाँ भी मरीज हैं, कुछ आप जितनी आपको जरूरत है आप लें अभी, मगर फ्यूचर के लिए स्टॉक कर रहे हैं आप, हमें भी तो ले देते, हमारे लोग मर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल इसका जो है आउटबर्स्ट जो है वो हो रहा है। हेल्थ केयर सिस्टम सही नहीं है, सब नाराज हैं, डॉक्टरों को वसाइल प्रोवाइड नहीं कर रहे। डॉक्टर इनफैक्ट फ्रंट लाइन जो हेल्थ वर्कर हैं दे आर गेटिंग इन्फेक्टेड एंड देयर इज लॉट ऑफ एंगर अबाउट इट कि आप तालियां बजा के सड़कों पर जो है वो मदावा नहीं कर सकते, हमें आप प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करते उसकी, ठीक है ना। तो ये आप देखिए कि दुनिया में लोगों ने वो भी निकालना शुरू कर दिया। और एक और बड़ी बात ये हुई कि WHO से निकल गया। अमेरिका जो है वो WHO से को छोड़ने के लिए तैयार हो गया, जबकि वर्ल्ड में $115 मिलियन पर ईयर जो है वो अमेरिका प्रोवाइड करता है WHO को, ये बाकी है। तो इसका मतलब ये है कि WHO एसेंशियली जो है वर्ल्ड इंटरनेशनल हेल्थ सर्विसेज विल कम डाउन टू स्टैंड स्टिल फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर अनलेस ये कि कुछ चेंज आए। सोशली क्या हुआ है? अच्छा, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है कि सोशली जो है वो एक अजीबो गरीब सूरत हाल हो गई है। मैंने भी मेरी मतलब यहाँ आने के बाद मैंने 14 दिन तक तो मैं अपने आप सेल्फ आइसोलेट किया अपने आप को। अभी भी मेरी बेटी वीकेंड पे आती है तो हम लोग लॉन में बैठ के दूर दूर बैठ के मिलते हैं, बैठते हैं, जो है वो किसी से उसको उनको मतलब ना गले मिलना है ना वो करना है। तो एवरीबडी इज हैविंग प्रॉब्लम, पैनिक। और उसके अलावा ये तो हर तरह से आप ये देखिए सोशल स्टिग्मा, जिस किस्म के हमको आजकल मैसेजेस आ रहे हैं, अजीब व गरीब मैसेज आ रहे हैं। यानी जिस शख्स को 2 लफ्ज पता है इसके बारे में वो तो कम लिख रहा है, जिसको नहीं पता है वो फॉरवर्ड कर रहा है, और नेगेटिव पोस्ट ज्यादा फॉरवर्ड कर रहा है। तो आप ये फेक न्यूज ये कर लें, फला चीज खा लें तो इसका इलाज हो जाएगा, ये तो कुछ है ही नहीं, गर्मी आएगी तो मर जाएगा, जो इसके अंदर ये पाकिस्तान में कहाँ आ गया वो तो खुद पछता रहा है, अब देखिए इसका क्या होगा। अब आप ये देख लीजिए कि किस तरह रोजाना सोशल नेटवर्क पे
आप लोग भी बैठते हैं सोशल नेटवर्क पे, जाते ही तकरीबन 20 जानने वालों की डेथ की खबर होती है ऊपर से नीचे तक, और उसमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखना पड़ता है हर एक का। रजा इलाही से इंतकाल हो गया। अरे भाई, रजा इलाही से इंतकाल की तादाद में इतना बड़ा इजाफा कैसे हो गया? मुझे पता चला कि कराची के अंदर तकरीबन जब 15% कब्रिस्तानों का एक दिन का निकाला गया तो मालूम हुआ कि वहां पर हजार डेथ ज्यादा हो रही हैं जो कि पिछले साल इस वक्त हुई थी। तो अगर आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6000 डेथ एक्स्ट्रा हो रही है इस वक्त। इनमें से कितनी कोविड-19 की और कितनी और हैं आपको नहीं पता, लेकिन सिर्फ कराची शहर में 6000 डेथ ज्यादा हो रही हैं जितनी पिछले साल हुई थी उससे। अब आप सोच लें कि बाकी शहरों का क्या हाल हो। ठीक है ना। फिर उसके बाद से हमारे पास कार्टून किस्म के दुनिया में कुछ लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स। स्पिरिचुअली कैसे करें? स्पिरिचुअली जो है वो उसमें अजीब अजीब आ रहा है भाई, ये अल्लाह का किया धरा है, अजाब इलाही है, कुछ नहीं कर सकते, आराम से बैठ जाओ, ये पढ़ लो तो सही हो जाओगे, सब लोग सही हो जाएगा, दुनिया सही हो जाएगी। तरह तरह के हर आदमी जो है, जिस तरह मैं एक बात कहता हूँ कि क्राइसिस का पता, जो क्राइसिस में आदमी के पता चलता है कि कितना मजबूत है, सारी चीजें वो सामने। एजुकेशनली जो है वो ये हुआ कि 2/3 ऑफ द स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स आर नाउ सिटिंग एट होम। 2/3, ओनली 1/3 हैव बीन गोइंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन लर्निंग जो है, हमारा जो सर्वाइव का जो प्रोग्राम है माशाल्लाह जो इतना सक्सेसफुल जा रहा है, वो उसको हमने अडॉप्ट किया। तो जिसने अडॉप्ट किया वो तो ऊपर आ गया, लेकिन जिसने नहीं अडॉप्ट किया उनकी जो लॉसेज हुए हैं। बेशतर कॉलेजेस के अंदर ये हुआ एजाज साहब के दो दो कोर्सेज करा के, दो दो जूम में लेक्चर करा के वो नाचते फिर रहे हैं कि हमने तो जो है वही शुरू कर दिया। एक साहब मुझसे कहने लगे कि फला जगह जो है वो 5 असाइनमेंट देते हैं हफ्ते के, आप जो है वो 25 देते हैं, 24 देते हैं, 20 देते हैं। तो मैंने कहा भाई 6 to 8 आवर्स पर घंटे कैसे बनेंगे? फिर आपने तो हफ्ते का 4 दिन तो जाया कर दिया, एक ही दिन में रख दिया। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एजुकेशनल, इस पे कभी अलग से पूरी बात करेंगे, इस वक्त टाइम कम है, लेकिन एजुकेशनली देयर हैज बीन मेजर चेंजेस। दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन वी और द गवर्नमेंट कंट्रोल इट? भाई फैसला करें ना कि कौन करेगा, तय करेगा। क्या ब्यूरोक्रेसी तय करेगी? क्या अदलिया तय करेगी? क्या सियासतदान तय करेंगे? क्या पार्लियामेंट तय करेगी? या एक्सपर्ट्स तय करेंगे? डिसीजन होंगे कैसे? यहाँ पर यह हाल है कि जो इस वक्त यूके के अंदर जो टॉप जनरल मेडिकल काउंसिल के लोगों की टीम जो है वो डेली प्राइम मिनिस्टर के साथ 4 घंटे बैठती है और डिस्कस होता है डेली प्लानिंग किस तरह होगी, ये होगी। कोई ऐसा नहीं होता कि वो बैठ के खुद से ऐलान कर दे या अचानक उसको पता चल जाए हो गए। अच्छा, इस बात पे चले, स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों को तो पता है कि कैसे गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल कर रही है दुनिया में। तो एक एंडेमिक होता है। एंडेमिक का मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर पीपल या कम्युनिटी में एक डिजीज शुरू हुई और मौजूद है, देन इट इज एंडेमिक देयर। इसमें फिर होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक में क्या होता है कि उसका आउटब्रेक हो गया, तेजी के साथ वहां फैल रही है। पैंडेमिक का मतलब यह है कि वो पूरी दुनिया में फैल गई है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो गया, जैसा कि कोविड-19 का है। अच्छा, उसके बाद से फिर क्या देखते हैं आप कि 2 नंबर हैं स्टूडेंट्स के लिए, मैं कह रहा हूं खासतौर पे, सीनियर्स को तो पता है कि एक होता है जिसे हम कहते हैं R0, एक होता है जिसे हम कहते हैं RT। R0 का मतलब ये होता है कि एक आम मरीज जो है वो कितनों को लगाएगा। ठीक है ना। मिसाल के R0 5 है, इसका मतलब ये है कि जिसको हुआ है वो 5 आदमियों को ऑन एवरेज लगाएगा ये। ठीक है, इसका मतलब ये। इसमें जैसे मीजल्स का सबसे ज्यादा है, 12 to 18 है, एक आदमी 12 से 18 लोगों को लगाता है। ठीक है ना। इसी तरह से इन्फ्लुएंजा का जो है वो 2 to 3 है। इंपीरियल कॉलेज ने काउंट किया है कि कोरोना वायरस का जो R0 है वो 1.5 to 3.5 है। ठीक है, ये तो R0 हुआ। दूसरा है जिसको हम कहते हैं RT। अच्छा, अब आपने क्या किया? आपने मरीजों को आइसोलेट कर दिया, आपने मरीजों को वैक्सीन इजाद कर ली, आपने कोई और तरीके कर लिया, आपने मास्क पहना दिया, आपने ये कर लिया, उससे लगाना कम हो गया, लगाना कम हो गया। तो जो कम हो गया, अब जो नई फिगर आई उसको कहेंगे हम RT। ठीक है ना। RT जो है ये बताता है कि इस वक्त एक्चुअल ट्रांसमिशन कितनी हो रही है। इस मर्ज की तो इतनी है, लेकिन इसका हमने कुछ चालाकी करके इसको कम कर दिया, तो अब कितनी होगी ये वो RT है।
अच्छा, दूसरी तरफ भी होता है, बेवकूफ़ी की हमने, ईद आई, हमने कहा सारी शॉपिंग सेंटर खोल दो, खोल दिया तो बढ़ गया, तो मतलब जो R0 जो है, यानी RT जो है वो R0 से बढ़ गया। ये इंतहाई अहमकाना और बेवकूफ़ी के जो लोग हैं उनमें होता है कि RT जो है R0 से बढ़ जाए, और ये ऐसी शदीद किस्म की गलती है जो किसी अक्लमंद और तहजीब याफ्ता माशरे में बर्दाश्त नहीं की जाती कि ये कैसे हो सकता है। जैसे हमारा ईद में हुआ, और अब मुझे खतरा है कि बकरीद और मुहर्रम और ईद मिलादुन नबी जो आ रहे हैं, इसमें खुदा न खास्ता दोबारा से हमारा RT आसमान पे ना पहुंच जाए। शम्स साहब, कितना टाइम रह गया? अभी है ना 10 मिनट? 5 मिनट्स और 5-6 मिनट्स बोल सकते हैं जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी, तो जी। ये देखें, अच्छी खबर एक ये है कि अब रिसेंट जो RT आया है पाकिस्तान का वो 0.74 आ गया है, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट। तो इसकी वजह ये है कि अब हमें इंशाल्लाह ताला अगर हमने अक्लमंदी की तो हमारे केसेस कम हो जाएंगे। कैसे कम होते हैं? कोविड में लोगों ने कम किए, लॉकडाउन और आइसोलेशन से कम किए, सोशल डिस्टेंसिंग से, मास्क से, क्लीनिंग द सरफेस से। अच्छा, उसके अलावा एक हर्ड इम्यूनिटी एक चीज होती है। इसका मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ अलग है, लेकिन कोविड-19 में 60% ऑफ द पॉपुलेशन अगर इन्फेक्ट हो जाए तो फिर ये खुद ब खुद ये कम हो जाएगा 60%, या फिर वैक्सीन निकल है। तो ये हमारे पास तरीके हैं जो जिससे कि हम इसमें RT को कम कर सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी को आप छोड़ दें फिलहाल, सिवाय वैक्सीन के। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोगों को अलाउ कर दें कि जब एक दूसरे को इन्फेक्ट करते रहो, और उसमें 60% अगर हो गया तो उसकी 5% मोर्टेलिटी में 1 अरब लोग दुनिया के मर जाएंगे। आप 1 अरब लोगों का मरना बर्दाश्त कर सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इस वजह से इसको तो भूल जाए, लिहाजा वैक्सीन ही एक प्रैक्टिकल चीज रह गई। तो वैक्सीन का क्या है? वैक्सीन के अंदर ये है कि लॉन्ग टर्म जो है वो वैक्सीन एक ही है। अच्छा, अभी जैसे ही ये शुरू हुआ उस वक्त से लेके अब तक 155 वैक्सीन पे काम हो चुका है, जिनमें से 23 वैक्सीन जो है वो एनिमल ट्रायल से निकल के ह्यूमन ट्रायल में आ गई। अच्छा, अब ह्यूमन ट्रायल में क्या 3 फेजेस हैं, प्री क्लिनिकल एनिमल, फिर फेज 1 के अंदर थोड़ी सी देते हैं, उसके अंदर देते हैं कि ये इसकी टॉक्सिसिटी कितनी है और थोड़ा बहुत इसकी इम्यूनिटी यानी कितनी इम्यूनोग्लोबुलिन G और M पर पैदा कर रही है। फेज 2 में लोगों की तादाद बढ़ाते हैं, फेज 3 में जनरल को देते हैं, उसमें टॉक्सिसिटी और इम्यूनिटी के साथ साथ उसकी अफेक्टिवनेस भी देते हैं, देखते हैं। इस वक्त 5 दवाएं ऐसी हैं, 5 वैक्सीन ऐसी हैं जो कि फेज 3 में आ चुकी हैं। उनके मैं आपको थोड़ा सा एक नाम बता देता हूँ। यूके के अंदर 2 हैं, एक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हम जो है वो 3 करोड़ वैक्सीन जो है वो सितंबर में प्रोड्यूस कर देंगे। यूके की आबादी है 6 करोड़, और ये 3 करोड़ अपनी पॉपुलेशन के लिए प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, विच इज ए ह्यूज थिंग। दूसरे इंपीरियल कॉलेज की, ये जो है जनवरी तक की बात कर रहे हैं। फिर आप आ जाए यूएसए में मॉडर्ना वैक्सीन जो है सबसे आगे जा रही है तेजी के साथ, और ये फेज 3 ट्रायल जो है इसका शुरू हो रहा है, और उम्मीद ये है कि अर्ली 2021 में ये निकल आएगी। इसी तरह 2 चाइना ने एक अजीब काम किया, कादिर साहब जी सर। चाइना ने एक अजीब काम किया है। उसने 1 करोड़ सोल्जर्स को बाय देयर कंसेंट एनरोल किया है, जिनको कि ये वाली है वैक्सीन लगने वाली है, नंबर 2 वाली, वो लगा रहे हैं, और उन्होंने शुरू कर दिया 15 जुलाई से। 15 जुलाई यानी आज क्या तारीख है? बस समझे कि उन्होंने शुरू कर दिया, अब 1 करोड़ को लगेगा और आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। दिस इज द फेज 3 ट्रायल ऑफ द फर्स्ट फेज 3 ट्रायल एवर। अच्छा, अब ये है कि आप इनफेक्ट अगर होना ही है खुदा ना खास्ता, तो आप क्यों ना हो, अभी हो जाए, चले बाद में, ये तो जान छूट जाए, हम साहब हो गए, फारिग हो गए। लेकिन 5 वजह ऐसे हैं जिससे कि आपको अभी नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। पहले हम इसको समझते थे सिर्फ नमूनिया, अब हमें पता चला कि नहीं, इसमें तो क्लॉटिंग भी हो रही है। तो आपने एस्पिरिन और हेपरिन का इस्तेमाल लाए, जो कि पहले अवेलेबल फरवरी में नहीं था। दूसरी बात ये थी कि आपने सोचा कि जी इसमें जो है वो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है कम होगी तो ब्रेथलेसनेस होगी और ये होगी। इसमें मालूम हुआ कि 70% जो है सेचुरेशन पे आदमी घूम फिर रहा है, अचानक गिरा और मर गया, यानी लोगों को पता भी नहीं होता कि वो कितनी है। तो इसलिए मुझे जो मिलता है मैं उससे कहता हूँ, भाई 3,000 रुपए का एक अदद पल्स ऑक्सीमीटर तो खरीद लो और घर में रखो और चेक करते रहो। तीसरी चीज जो है इसके अंदर ये है कि 2 दवाइयां जो है जो कि अभी
FDA ने अप्रूव किए हैं, एक तो रेमडेसिविर और फेविपिराविर, जिससे हमें पता चला है कि दे एक्चुअली हेल्प सम प्रोवाइड सम रिलीफ टू द पेशेंट्स. चौथी बात ये हुई है कि इम्यून जो साइटोकाइन स्टॉर्म जो होता है, कादिर साहब ने पढ़ाया था इसको मेरे ख्याल है, साइटोकाइन स्टॉर्म जो होता है ना, ये जो है इसके लिए जो स्टीरॉइड्स हैं, जब ऑक्सीजन की जरूरत हो या जब वेंटिलेटर की जरूरत हो, स्टीरॉइड्स कॉज लॉट ऑफ गुड इफेक्ट. ये पहले पता नहीं था, ये रिसेंट नॉलेज है. और पांचवी बात ये है कि पेट के बल लेटने से इसमें किसी वजह से हवा बेहतर आती है, ऑक्सीजन बेहतर होती है. तो ये चीजें पहले नहीं पता थी, फरवरी में जो बेचारे मर गए अब पता है. तो देयर रिस्क बिकम, तो एज द टाइम इज गोइंग वी आर गेटिंग मोर इंफॉर्मेशन and we are getting clever in the treatment, and hopefully we have more chances of survival if we are infected later rather than earlier. ठीक है ना. अब वो सवाल आखिर में जिनका हमें नहीं पता है, पहली बात तो ये है, when will it go away? Don't ask her. Will it ever go away? I don't know. Will the life ever return to normal? I don't know. Will those infected suffer some permanent damage? I don't know. Can a patient be reinfected after cure? I don't know. Will there ever be a vaccine? I don't know. If yes, how effective will it be? Don't know. How long a recovered patient or a vaccinated person be immune to COVID-19? महीने 2 महीने बाद दोबारा वैक्सीन तो नहीं लगानी पड़ेगी? We don't know. So these are the 7 questions which are still unanswered, and we hope that we'll find the answer soon, inshallah. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Syed Razi Mohammed. It's really a very unique and different types of presentation, and you have covered all the lifestyles, value and other life के जो जितने भी सारे मामलात हैं, हवाई जहाज से लेके और बच्चों का स्कूल और स्टॉक एक्सचेंज तक, you have covered all this. Thank you very much for your nice presentation. Thank you. Now I have 1, 2, 3 questions. First question, may I ask to Dr. Razi that are there some precautions when the COVID-19 patient needs surgery? With all the other precautions, are there some special precautions when a person needs some surgery? Yes, there are, but I think it will be fair for Professor Aijaz to answer it since it was his topic. So मेरा ख्याल है कि अगर एजाज साहब बताएं तो ठीक है. Okay, over to Aijaz sir. Over to Aijaz sir. Thank you, Shamsul. I think the precautions that have to be taken, I've already mentioned, it depends on whether the case is elective or emergency. If it is elective case, then we have to go for COVID testing, and if the patient is suspicious or positive, then they have to be isolated for 14 days and then re-tested till negative, and then we can plan for surgery. But in emergency cases, we have to operate on the patient anyway, so one has to take all the precautions in the operation theater, as well as the personnel that are working or operating on the patient have to take all the precautions when operating. The precautions will include PPEs, all type of PPEs that cover your face and eyes, and masks and overalls, all these things, and disposable things have to be used, and minimum time have to be taken for surgeries. So many precautions have to be taken on COVID patients that have to be operated. Now this is a very optional question for both of the surgeon. Anyone can answer that. Someone is asking that how the OT and the instruments are to be sterilized considering back-to-back surgeries. Suppose if there is only one OT and it has got 4 operations, then how it will be sterilized, and instruments how they will be sterilized? I think the sterilization procedure is same as that we sterilize, because sterilization is a process that kills the bacteria as well as viruses. So once we sterilize the instruments in autoclaves,
that definitely at 240 degrees centigrade temperature, that would definitely kills the viruses. But it is the question of laparoscopy instruments that have to be kept for longer periods in the um, sterilizing solutions. Um, I think then one has to, if one has to carry on the surgery one after other, then there should be more than one set of instruments so that you put the other set for sterilization and you use the fresh one for surgery. Right. Now this, I think Operation one theaters. very good Yes. answer. I think I'll just add that जो टच टेक्निक है ना, जो सरफेस से ट्रांसमिशन है वो बहुत लो है, ये बात समझने की जरूरत है. और सर्जन और असिस्टेंट और एनीस्थेटिस्ट ये सारे के सारे जो है वो ग्लव्स और सब चीजें पहने हुए होते हैं, तो जो उतार के वहां फेंक देते हैं और नए में नए लाते हैं, लिहाजा दे विल नॉट बी. लेकिन कोई आउटसाइडर पेशेंट आ जाता है हु इज कैरिंग इट एंड ही टचेस द सरफेस, देन दे हैव टू बी cleaned by 60%. Solution containing at least 60% of alcohol. This is the recommendation. सही है this, जैसा? this question is, I think, from someone who likes the surgeon more, and I request Dr. Razi to answer this. That are the surgeons are more risk for COVID than others? देखिए, हेल्थ केयर वर्कर्स आर ऑल इन हाई रिस्क. हर जगह, खास तौर पे पाकिस्तान में हमने देखा है कि हेल्थ केयर वर्कर्स का इंतकाल हुआ है. अभी आज ही मेरा ख्याल है कि हमारी फैकल्टी वाले के अंदर भी पड़ा हुआ था एक इंतकाल का, जिसकी हम कर रहे थे. फिर किसी और का फातिम लाके साहब ने डाल दिया, वो भी हमने डाले. तो दो तो आज ही आ गए. दोनों सर्जन थे. तो नतीजा ये हो रहा है कि पीपल आर एक्चुअली पासिंग अवे. लेकिन ये है कि एक्चुअली ड्यूरिंग द सर्जरी कोई ऐसी बात नहीं है, सिवाय इसके कि वी सी द पेशेंट, वी डील विद देम, वी करे. वही है कि जो ट्रांसमिशन है, उसको डॉक्टर कादिर की प्रेजेंटेशन अगर इससे सुनी है वो बड़ी अच्छी थी. जो ट्रांसमिशन जो है, जो एरोसोल ट्रांसमिशन वगैरह है, उसको हम अवॉइड करें तो बेहतर. दूसरी एक बात मैं और कहूँगा यहाँ पे डॉक्टर शम्स, कि एक बात नहीं भूलनी चाहिए, वो ये है कि हम आफ्टर ऑल वी आर मेडिक्स. तो कहाँ तक आप जो है वो उस चीज से, आपको भी हुआ, आपने भी गुजार लिया, कादिर साहब ने आपको ट्रीटमेंट दी, ठीक है ना, वो आपके उनको भी लग सकता था, लेकिन उन्होंने कहा भाई लग जाए तो लग जाए, लेकिन मैं तो नहीं भाग रहा, मुझे तो करना है. तो जो लोग आते हैं आगे, वो आ रहे हैं आगे. जिसको मरना है वो बिस्तर पे भी लेट के मर जाएगा. लेकिन हम एहतियात जरूर करेंगे, हर तरीके से एहतियात करेंगे, मगर उसके लिए हम अपने प्रोफेशन को लेट डाउन नहीं करेंगे. अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन डॉक्टर सैयद जफर अब्बास पूछ रहे हैं कि दीज आर ऑल द प्रिकॉशंस अबाउट पेशेंट. What about the safety of patients? Are there are any special precautions for the patient during surgery? During surgery, I think. During surgery, now we have divided the patients into two groups. One who are elective and they are undergoing a screening, and positive cases are not being operated. But those who are positive, which are positive cases, now that is the important thing, that you operate the positive cases only in one theater that is for positive cases. Number one. Number two, the standard precautions have to be taken, but that may not necessarily save the patient. But once the patient is out of surgery and goes to the ward, then have to observe all the precautions like mask and social distancing and the other. ये जो आप देख रहे हैं कि जिसके अंदर नो मास्क में दोनों एक दूसरे को वन मास्क में ये इसको तो दे रहा है मगर इसको, तो ये अगर आप पेशेंट और सर्जन दोनों समझ लें, अगर आप them are covered, then both are safe. If one of them is covered, it is only partial. अगर दोनों में, तो ये मैं समझता हूँ कि this is one of the best slide I have seen on the issue, that both wear the mask. There's only 1.5% chances of transmission only when both have the mask. Yeah. Otherwise, there's a lot of transmission rates. ये डॉक्टर एजाज साहब आपने शेयर की है ये स्लाइड मास्क. अच्छा, ओके.
अच्छा, बिफोर इससे पहले कि मैं पार्टिसिपेंट्स का और स्पीकर्स का शुक्रिया अदा करूं, एक और सैड न्यूज़ ये है कि आज डॉक्टर अब्दुल कादिर खान के ससुर फादर इन लॉ अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। तो ऑन बिहाफ ऑफ PMA मीरपुर खास, I thank Professor Dr. Aijaz Memon and Dr. Syed Razi Mohammed for their nice and interesting and informative presentations on different items of with COVID-19. And because Dr. Razi has already given his presentation, so no need for the concluding remarks. And for finishing it up, I request Dr. Abdul Qadir Khan to summarize this program. Thank you, Dr. Qadir. Thank you very much, Dr. Shamsul Arfeen, for your kind words. It was very nice session. Both the speakers talked to the topic very clearly. First talk was by Dr. Aijaz Memon Saab, who talked on the laparoscopy and COVID-19, and he covered many important issues related to the surgeon, and he also advised about the precautions for the surgeons and for the patients as well. And the second talk was also very nice as usual by the Dr. Syed Razi Mohammed, जो पूरी जो है वो जैसे आपने कहा कि भाई जहाज से लेकर उन्होंने तमाम दुनिया की बात जो है उन्होंने अपनी इस प्रेजेंटेशन के अंदर कही, और मैंने भी इस प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से सुना, और उम्मीद है कि स्टूडेंट्स ने भी सर की प्रेजेंटेशन को सुना होगा, और डॉक्टर्स जिन सर्जन ने जिन्होंने ज्वाइन किया था वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो especially R0 or RT were the important things that the students must have learned. Yes. So both speakers, they speak very nicely on the topic. They were on their talk. So without further delay, I will hand over to Dr. Shamsul Arfeen. Okay, thank you very much, Dr. Abdul Qadir Khan. Really thankful to both of the speakers, and I have really congratulate and very thankful to the officials and representative of the Get Pharmaceutical who have arranged this series of programs and give us a lot of information regarding COVID and the other problems related to COVID. So I think they are really appreciated. They have arranged this series of programs. We have the last program on 19th of this July 2020, and that will start on 9 p.m. I think 9 p.m. So that will start from 9 p.m. Dr. Syed Zafar Abbas and Dr. Lubna will be the speaker on that program. So stay tuned. We will inshallah meet on 19th of this month. Thank you very much once again. And by this, we come to the end of this program. Thank you very much once again. Thank you. Bye. Thank you, sir. Allah Thank you, everyone.